Hello students, welcome to my channel Hans Commerce Tutorial for the lectures on commerce, accounts, finance and management. My suggestion to you, before watching the video, please go to the description below my video. You'll find a link there. Take a printout of the problems given in the link and keep it ready before watching the video so that you can be able to understand the problem, the solution and the explanation to get the maximum benefit from the lectures. Thank you. Come on students, now we'll start problem number 11. So 10 problems so far we have completed on the calculation of value of goodwill. Now 11th problem, see carefully. X company limited is to be absorbed by Z company limited. So in order to determine the purchase consideration, goodwill was agreed to be taken at 3 years purchase of the average annual super profits. So goodwill has to be calculated by using super profit method. So goodwill का formula super profit into number of years of purchase, 3 years of purchase given. So profits are being averaged for 5 years. So average profit calculate करेंगे 5 years के. The profits of X company limited for the last 5 years before charging income tax at 50% are respectively. So 5 years profits are given. That is 3,80,000, 3,50,000, 5,50,000, 4,90,000, 4,30,000. So profits are fluctuating. So simple average profit will calculate for each of the above 5 years. 2 of the directors of X company limited will be appointed to the board of directors of Z company limited at a remuneration of 40,000 each per annum. तो पुरानी कंपनी जो थी एक्स कंपनी, उसके 2 डायरेक्टर्स नई कंपनी के डायरेक्टर्स बन जाएंगे फ्यूचर में. जेड कंपनी नई न्यू कंपनी. तो the 2 directors of X company are going to become the directors of Z company in future and each have to be paid 40,000 rupees per annum. तो एक डायरेक्टर को 40,000 रुपए देना है, तो 2 डायरेक्टर्स के 80,000 रुपीस. दिस द एक्सपेंडिचर, फ्यूचर एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड. तो पहले क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मालूम करेंगे. वो एवरेज प्रॉफिट में से ये एक्सपेंसेस निकाल देंगे, फ्यूचर एक्सपेंसेस 80,000 रुपीस पर एनम. इन द पास्ट नो चार्ज वाज मेड अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द सर्विस ऑफ द डायरेक्टर्स कंसर्न. तो प्रीवियस ईयर में ये डायरेक्टर्स को कोई रेम्युनरेशन नहीं मिलता था, लेकिन फ्यूचर में देना पड़ेगा. तो वन एक्सपेंडिचर इज गोइंग टू अराइज इन फ्यूचर. द एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड इन द नेट टैंजिबल एसेट्स ओवर द पीरियड इज 11 लाख रुपीस. तो 11 lakh rupees is the average capital employed. No need to find out the capital employed. Directly given 11 lakh. And the normal return to be expected from the particular type of business carried on by X Limited is 10%. NRR 10%. So 11 lakh rupees is the average capital employed and 10% is the NRR. So multiply 11 lakh into 10%, 1,10,000 is normal profit. Now, calculate the goodwill of the X company limited based on the above information. Very easy. Simply we have to calculate the value of goodwill. तो goodwill मालूम करने के लिए हमको सुपर प्रॉफिट चाहिए. सुपर प्रॉफिट के लिए एफएमपी और एनपी चाहिए. तो नॉर्मल प्रॉफिट इजीली वी कैन कैलकुलेट 11 lakh rupees into 10%. It is 1,10,000. So easily we got the normal profit, right? So easily we got the normal profit 1,10,000. Now FMP मालूम करने के लिए profits are given before tax. The profits of the company for the past 5 years before charging income tax at 50% off. तो ये जो profits है, it is given in the problem that before charging income tax. तो हमको after charging income tax चाहिए, before charging नहीं चाहिए. तो first of all net profits are given 380, 350, 550, 490, 430. अब उसमें से पहले directors remuneration which is payable in future. फ्यूचर में 2 डायरेक्टर्स को, एक डायरेक्टर को 40,000, 80,000 रुपीज फॉर 2 डायरेक्टर्स आर टू बी पेड. तो 80,000 रुपीज निकाल देंगे. तो ये नेट प्रॉफिट में से डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन माइनस कर दो, व्हाट यू गेट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स. नाउ टैक्स इज पेएबल एट द रेट ऑफ 50% गिवन इन द प्रॉब्लम. तो डिडक्ट द टैक्स, विल गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 1,50,000, 1,35,000, फिर 2,35,000 फ्लक्चुएट हो रहा है. When profits are fluctuating, we calculate simple average profit. So, year 1, 2, 3, 4, 5, profits are given. Here, profits are given. Take the total of the profit 9 lakh. Average profit 9 lakh divided by 5 is 1,80,000. So we got average profit
That is nothing but FMP. FMP we got 1,80,000. Now super profit is equal to FMP minus NP. FMP 1,80,000 and normal profit is 1,10,000. So 180 minus 110, 70,000 rupees is the super profit. Now multiply super profit with number of years of purchase which is given in the problem, 3 years. So multiply 70,000 into 3, you will get 2,10,000. And this is the goodwill. Now see the problem number 12. 12th problem. From the following, calculate the value of goodwill at 4 years purchase of super profits. A's financial position is as follows. Sundry assets 9,27,342. Current liabilities 52,492. Average net profit of the last 4 years 1,20,500. Average capital employed 9 lakh. Remember, when capital employed is given, we are not concerned with assets and liabilities. अगर capital employed अगर नहीं देता, तो we would have used the assets and liabilities to find out capital employed. But here average capital employed is given. So just ignore the sundry assets and current liability given in the problem. So average capital employed 9 lakh. Partners average annual remuneration. And future में एक remuneration pay करना पड़ेगा. तो average profit में से ये annual remuneration minus कर देंगे. तो we'll get FMP. The expected rate of return is 10%. Is the NRR. It's a very small problem, simple problem. Everything is given in the problem. Normal profit, average capital employed into NRR. Average capital employed is 9 lakh, NRR is 10%. So 90,000 rupees is the normal profit. Now FMP calculate करने के लिए average profit is given 1,20,500. So average profit में से remuneration payable to the partners is 18,000 given in the problem. तो minus कर दो, FMP आ गया 1,02,000. एक बार FMP और normal profit if you get easily you can find out the super profit. Super profit FMP minus NP 1,02,500 minus 90,000. 12,500 is the super profit. Now goodwill is equal to super profit into number of years of purchase. 4 years it is given 50,000 rupees is the value of goodwill. This is the end of problem number 12. Come on students, now we'll start problem number 13. See the 13th problem carefully. Hammer Limited and Grace Limited propose to amalgamate. There are two companies, Hammer Limited and Grace Limited. Both the companies wants to amalgamate, merge. Balance sheet of Hammer Limited and Grace Limited as on 31st December 2005. In the theory session, we have already discussed what is the need when the goodwill has to be calculated. In case of joint stock companies, when two or more companies are merged, amalgamated, there is a need of calculating the goodwill. So here in this problem, two companies are there, they are amalgamating. So there is a need of calculating goodwill of both the companies, Hammer Limited and Grace Limited. The balance sheets are given. Equity and liabilities, shareholders fund, share capital 5 lakh, 2 lakh, reserves and surplus 3 lakh 50,000. Non-current liabilities are not there. Current liabilities are 1 lakh and 50,000. Liability side over. So outside liabilities are only current liabilities. एक current liabilities ही है outside liability. Then assets में fixed assets, tangible fixed asset 4 lakh, 1 lakh, non-current investments 1 lakh. ये non-current investment, non-trade investments है. ये सिर्फ Hammer Limited में है, Grace में नहीं है. तो this should not be considered while calculating capital employed. Non-trade investment should not be taken. और इसके ऊपर अगर कुछ income आ रही तो वो income भी नहीं लेना. Current assets we should take. Share capital, then reserves and surplus, net profit after taxation. So net profits are given for both the companies for 2003, 4, 5. तो हमको average profit निकालना है, right? So profits are fluctuating, so we calculate simple average profit of the last 3 years. Goodwill for the purpose of amalgamation may be taken at 4 years purchase of average super profits, trading on the basis of 15% normal profit on closing capital invested. Specifically given that we have not to calculate average capital. We have to calculate on closing capital. The current assets of Hammer Limited are to be taken at 4,20,000 and that of Grace Limited 2,10,000. These are the present value of current assets.
तो बैलेंस शीट के जो वैल्यूज है वो नहीं लेंगे, ये प्रेजेंट वैल्यूज लेंगे. Ascertain the value of goodwill. That's it. So we have to find out the goodwill of Hammer Limited and Grace Limited. तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट के लिए एफएमपी एंड एनपी. तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड. तो फर्स्ट विल कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड. सी द प्रॉब्लम. कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड हैमर लिमिटेड, ग्रेस लिमिटेड. एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स 4 लाख 1 लाख. करंट एसेट्स ये प्रेजेंट वैल्यू है. ये फिक्स्ड एसेट बैलेंस शीट में जो दिया वही वैल्यूज है, लेकिन करंट एसेट्स का प्रेजेंट वैल्यू दिया है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन प्रेजेंट वैल्यू. द टोटल आउटसाइड लायबिलिटी ओनली वन करंट लायबिलिटी, सब्ट्रैक्ट कर दो, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया. नो नीड टू कैलकुलेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बिकॉज स्पेसिफिकली इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम. टेक क्लोजिंग कैपिटल. तो दिस द क्लोजिंग कैपिटल. नॉर्मल प्रॉफिट एनपी फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर. सो हैमर लिमिटेड नॉर्मल प्रॉफिट 7,20,000 into 15%. प्रॉब्लम में दे दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%. देन ग्रेस लिमिटेड 2,60,000 into 15%, 39,000. तो नॉर्मल प्रॉफिट वी गॉट. अब जो है एफएमपी मालूम करना, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट मालूम करेंगे ईयर 2003-4-5 हैमर लिमिटेड, ग्रेस लिमिटेड. चलिए प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया. एवरेज प्रॉफिट वी गॉट 1,35,000, 47,000. Income from non-trade investment. There is non-trade investment in case of Hammer Limited. एक कंपनी हैमर लिमिटेड में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है जो कि हम नहीं लिए. तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इनकम है वो भी नहीं लेंगे. तो कितना परसेंटेज? 6%. प्रॉब्लम में दे दिया है इन्वेस्टमेंट आ रहा है 6%. तो 6% ऑफ 1,06,000. तो 6,000 रुपीज इज इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऑफ हैमर लिमिटेड. सब्ट्रैक्ट कर दो 6,000 रुपये. तो फिर ट्रेड इनकम जो आ जाएंगे 1,29,000, 47,000. दिस द एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. नाउ सुपर प्रॉफिट मालूम करने के लिए फॉर्मूला एसपी इज इक्वल टू एफएमपी माइनस एनपी. तो सुपर प्रॉफिट एफएमपी 1,29,000 and normal profit 1,08,000. 21,000 is the super profit. Grace Limited में SP is equal to 47,000 minus 39,000, 8,000. So we got the super profit. Now simply apply it in the formula. Goodwill is equal to SP into number of years of purchase. So goodwill is equal to 21,000 into 4 years of purchase. 4 years of purchase given in the problem. So multiply karo 21,000 into 4, 84,000 rupees is the goodwill of Hammer Limited. Similarly, goodwill of Grace Limited 8,000 SPA, 4 years purchase. 8,000 into 4, 32,000 is the value of goodwill of Grace Limited. That's all. This is the problem of 13th one. Now we will start the 14th problem. See the 14th problem carefully. The balance sheet of A Company Limited discloses the financial position as on 31st December 2005 as follows. Equity and liabilities, shareholders fund. Share capital. Share capital is given 3 lakh, reserves and surplus 86,000. Non-current liabilities are not there. Current liability में trade payable, short term provision. तो आउटसाइड लायबिलिटी जब लेंगे तो खाली दो ही चीजें लेंगे, एक ट्रेड पेबल, एक शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. देन एसेट साइड, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स 2,65,000. इनटैंजिबल एसेट गुडविल वी शुड नॉट टेक. जो गुडविल बैलेंस शीट में दिया है इसको नहीं लेंगे. तो प्रीवियस थ्योरी सेशन वी हैव डिस्कस्ड 3 एसेट्स वी शुड नॉट टेक व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. फर्स्ट गुडविल अगर दिया तो नहीं लेंगे, फिक्टिशियस एसेट नहीं लेंगे और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे. ये 3 एसेट्स नहीं लेंगे. तो गुडविल अब दिया 30,000 वी शुड नॉट टेक. करंट एसेट्स में इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऑल दीस थिंग्स विल टेक. नोट्स, शेयर कैपिटल दे दिया, रिजर्व्स दे दिया, ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, टैंजिबल एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेड रिसीवेबल, book debts, less provision. You are asked to value the goodwill of the company for which the following information is given. तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन दे दिया है, केयरफुली देखिए. फर्स्ट, द रीजनेबल रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्लास ऑफ बिजनेस डन बाय द कंपनी इज 12%. दिस इज द NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%. Adequate provision has been made in the accounts for income tax and depreciation. ये तो जनरल इंफॉर्मेशन है कि adequate provision बना है इनकम टैक्स के लिए और depreciation. The rate of tax may be taken at 50%. Again, याद रखिए ये 50% एक क्लू दे दिया है कि करंट ईयर का प्रॉफिट मालूम करने के लिए. फॉर फाइंडिंग आउट
current year's profit, the clue is given income tax rate. The average rate of dividend declared by the company for the past 5 years was 15,000. We are not concerned. हमको अगर NRR अगर नहीं देता तो ये 15% NRR लेते थे, लेकिन पहले दे दिया कि in the similar type of business the return earned by all the companies is 12%. This is the NRR. अब पूरे अदर कंपनीज 12% रिटर्न अर्न कर रहे हैं, वो एनआरआर है, और ये कंपनी जिसका हम गुडविल मालूम कर रहे हैं वो कंपनी 15% डिविडेंड पे कर रही है, इससे कोई मतलब नहीं, अपने को वी डोंट रिक्वायर इट. देन गुडविल में बी टेकन एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, दैट्स इट. नाउ सी द सॉल्यूशन केयरफुली. कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. पहले एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स ले लिए, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश. अब देखिए यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं लिए, वी हैव नॉट टेकन इन्वेस्टमेंट, वी हैव टेकन ऑल एसेट्स. देन आउटसाइड लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 55,000, टोटल इज 1,24,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 3,56,000. जब करंट ईयर का प्रॉफिट दे दिया तो वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. अब तो कैपिटल एम्प्लॉयड आया, फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बुक. अब देखिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज गिवन एज 55,000. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया है 55,000 और रेट ऑफ इनकम टैक्स 50%. तो अज्यूम ये करना है कि जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया वो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है. करंट ईयर 55,000 रुपीज इज द प्रोविजन फॉर टैक्स और 50% इज द टैक्स रेट. तो फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना रहेगा? 55,000 ही रहेगा. अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू अर्न 200 रुपीज, अगर आपका टोटल प्रॉफिट 200 रुपीज है, 50% टैक्स है, तो 200 रुपीज का 50% 100 रुपीज होगा. तो 200 रुपये अगर अर्न करे तो 100 रुपीज टैक्स पे कर देंगे, तो बचेंगे कितने आपके पास? फिर 100 रुपीज ही बचेंगे, क्योंकि आधा टैक्स पे कर रहे हैं, आधा प्रॉफिट रख रहे हैं. तो सिमिलरली जब 55,000 रुपीज टैक्स पे कर रहे हैं तो टैक्स के बाद आपके पास बचेगा कितना? 55,000 ही बचेगा. तो करंट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 55,000. ये क्लू दे दिया. दैट लॉजिक यू हैव टू रिमेंबर कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी उतना ही रहेगा, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 50%, आधा. सो हेंस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएटी इज 55,000. द करंट ईयर्स प्रॉफिट इज 55,000. देन कैपिटल एम्प्लॉयड 3,56,000. अब उसमें से हाफ ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट निकाल देंगे. 55,000 का हाफ 27,500 माइनस कर दो, 3,28,500. This 3,28,500 is the average capital employed. Now we can calculate normal profit. So normal profit is equal to average capital employed into NRR. NRR 12% दे दिया, तो 39,400 is the normal profit. Now FMP 55,000. Actually FMP का मतलब past average profit adjusted for future changes. We are not given past average profit. जब पास्ट एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया तो करंट ईयर का जो भी प्रॉफिट रहेगा वही एफएमपी ट्रीट करेंगे. तो करंट ईयर का जो प्रॉफिट है 55,000 है, तो एफएमपी 55,000. सुपर प्रॉफिट एफएमपी माइनस एमपी 55,000 माइनस 39,200, 39,420, 15,580 is the super profit. Now goodwill is equal to super profit, number of years of purchase 15,580 into 3 years. प्रॉब्लम में दे दिया, तो 46,740 is the value of goodwill. This is the end of problem number 14. Come on students, now we'll start problem number 15. See the problem 15th. A company desirous of selling its business to another company has earned an average profit of 1,60,000 per annum in the past. It is considered that such average profit fairly represents the profit likely to be earned in future, except that. तो previous years में, past में जो average profit earn करा था कंपनी 1,60,000, और expectation ये है कि future में भी same profit earn करेगा, except some few points. What are the few points? Directors fees 50,000 charged against such profit will not be payable by the purchasing company, whose existing board can easily cope up with the additional administrative work at the present fees payable to directors. इतना lengthy wording के बजाय simply we can say directors fees which were paid earlier, now in future it is not to be paid. एक expenditure पहले था,
पहले डायरेक्टर्स को 15,000 रुपए पे कर रहे थे, अब फ्यूचर में 15,000 रुपए नहीं पे करेंगे। जब डायरेक्टर्स फी नहीं पे करेंगे तो द प्रॉफिट विल इंक्रीज। तो वो पास्ट एवरेज प्रॉफिट जो 1,60,000 है उसमें 15,000 रुपीज ऐड कर देंगे, बिकॉज द एक्सपेंडिचर इज नॉट टू बी पेड इन फ्यूचर। सिमिलरली, rent of rupees 25,000 per annum which had been paid by the vendor company will not be a charge in the future, since the purchasing company owns its premises and can supply the accommodation necessary for the staff and equipment of the vendor company. Previous vendor company जो पे कर रही थी 25,000 रुपीज रेंट पे कर रही थी प्रेमिसेस के लिए, लेकिन अब परचेसिंग कंपनी नीड नॉट पे रेंट बिकॉज इट इज हैविंग सफिशिएंट प्रेमिसेस व्हिच कैन अकोमोडेट द बिजनेस। अब ये जो बिजनेस खरीद रहे हैं ये बिजनेस के लिए सफिशिएंट प्रेमिसेस है, तो किराया पे करने की जरूरत नहीं है, तो एक्सपेंडिचर अवॉइडेड, तो इनकम विल इंक्रीज। जब खर्चा कम हो जाएगा, एक्सपेंडिचर कम होगा, तो इनकम बढ़ेगा। दैट्स व्हाई ये प्रॉवर्ब इज देयर, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। तो जितना सेविंग करेंगे, जितना एक्सपेंडिचर कम होगा, उतनी हमारी इनकम बढ़ती जाएगी। तो 1,60,000 रुपीज जो प्रॉफिट अर्न कर रही थी पहले वेंडर कंपनी, उसके दो एक्सपेंडिचर पे करने के बाद 1,60,000 रुपीज आ रहा था। वो दो एक्सपेंडिचर ये है, डायरेक्टर्स फीस 15,000 और रेंट 25,000। अब फ्यूचर में नो डायरेक्टर्स फीस पेएबल, नो रेंट पेएबल, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे 1,60,000, तो विल गेट द एफएमपी। The value of the net tangible assets of the vendor company at the proposed date of sale was 18 lakh. Net tangible assets, that is nothing but capital employed. The capital employed of the vendor company is 18 lakh, and it was considered that a reasonable return on capital invested in this type of industry was 10% NRR. NRR 10%. So 18 lakh rupees ka 10%, 1,80,000 rupees is the normal profit. Calculate the value of goodwill by capitalization of expected future net profit. So this is the first problem in which we have to apply capitalization method. Abhi tak so far we have applied average profit method and super profit method. Now in this problem, capitalization method. Actually there is no difference between super profit and capitalization method. Only the formula will change. We'll discuss. Now first of all, you see the problem from beginning. Normal profit, capital employed into NRR. प्रॉब्लम में दे दिया कैपिटल एम्प्लॉयड 18 लाख रुपीस, एनआरआर 10%, तो 1,80,000 रुपीस इज द नॉर्मल प्रॉफिट। तो एफएमपी मालूम करने के लिए पास्ट एवरेज प्रॉफिट 1,60,000। टू दिस वी हैव टू मेक टू चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस इन फ्यूचर। द टू चेंजेस आर नीड नॉट पे डायरेक्टर्स फी, डायरेक्टर्स फी नॉट पेएबल इन फ्यूचर, ऐड कर देंगे 15,000, तो 175 हो गया। रेंट नॉट पेएबल इन फ्यूचर, फ्यूचर में रेंट पे करने की जरूरत नहीं है, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ऐड कर देंगे 25, तो FMP will be 2 lakh. Now super profit, FMP minus NP, 2 lakh minus 1,80,000, 20,000 rupees is the super profit. Now goodwill according to capitalization method. The formula for calculating goodwill according to capitalization method is super profit divided by NRR. Super profit divided by NRR into 100. So super profit we got 20,000. NRR 10%. NRR 10% है, तो divide by 10 into 100. 2 lakh rupees is the value of goodwill according to capitalization method. That's all. This is the end of problem number 15. Now problem number 16. Ascertain the value of goodwill according to capitalization method. Again we have to apply capitalization method. Equity and liabilities, shareholders fund, share capital 2,50,000. Reserves and surplus 80,000. Then non-current liabilities, non-current liabilities are not there. Current liability, trade payable, other current liabilities. So two outside liabilities are there. Then assets में non-current assets, fixed assets, tangible. Then intangible asset में goodwill दिया है, ignore. We should not take goodwill. Then inventories, trade receivable, cash and cash equivalent. Share capital, reserves and surplus, trade payable, sundry creditors. Bank, other current liability, bank overdraft payable within 8 months, 6 months. Tangible assets, building machinery, cash and cash equivalent. ये सब information दे दिया. The company commenced operation in 2004. The profits earned before providing for taxation have been as follows. ये जो profit दिया before tax है, हमको after tax चाहिए. You may assume that income tax rate 50% has been payable to these profits. The average dividend paid by the company for the 4 years is 10%, which is taken as reasonable return expected on capital invested in the business. तो NRR 10% है on capital invested in the business. Capital employed के ऊपर 10% is the NRR.
Now, see the solution carefully. Calculation of capital employed. So first we take tangible assets, building, machinery, then current assets, inventory, trade receivable, cash. अब ये assets में goodwill नहीं लिया, we should not take goodwill. Then take the total outside liability, trade payable, other current liability. Then capital employed we got 3 lakh. Now normal profit, capital employed into NRR 3 lakh into 10% 30,000. चलिए normal profit आ गया. अब मालूम करना है FMP. FMP मालूम करने के लिए profits are given before tax. तो प्रॉफिट्स 1 2 3 4 5 65 60 70 फ्लक्चुएटिंग हो रहा है, तो फ्लक्चुएटिंग हो रहा है तो सिंपल एवरेज टेक द टोटल ऑफ द प्रॉफिट 3,75,000 डिवाइड बाय 5 75,000 रुपीस इज द एवरेज प्रॉफिट. अब एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स 75,000, उसमें से इनकम टैक्स 50% निकाल देंगे. एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं है, तो जो भी प्रेजेंट प्रॉफिट रहेगा, एवरेज प्रॉफिट रहेगा, दैट इज द फ्यूचर प्रॉफिट. Less tax 50%, 37,500. Profit after tax is 37,500. So this 37,500 is the FMP. The SP super profit is equal to FMP minus NP. 37,500 minus 30,000, 7,500 is super profit. Goodwill super profit divided by NRR into 100. Same formula. Goodwill according to capitalization method, super profit by NRR into 100. So super profit we got 7,500. NRR 10% into 100. 75,000 rupees is the goodwill value. That's it. This is problem number 16. Now last and final problem, problem number 17. See the problem. Mr. Wiseman has invested a sum of rupees 2 lakh in his own business, which is very profitable one. The annual profit earned from his business is 45,000, which includes a sum of 10,000 rupees received as compensation of a part of his business premises. देखिए, ये वाइजमैन ओनर ऑफ द बिजनेस है, इन्हें 2 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करा और एवरी ईयर उसको 45,000 रुपीज एनुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकल रहा है. लेकिन 45,000 रुपीज में से 10,000 रुपीज इज ए पार्ट ऑफ कंपनसेशन फॉर पार्ट ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस. इसके जो बिजनेस प्रेमिसेस है उसका एक पार्ट को निकालकर उन्हें किराए पर दे दिया, रेंट पे दे दिया. अब उसका कंपनसेशन जो रिसीव कर रहा है, इसको नॉन ट्रेड इनकम कहते हैं. इट इज नॉट रिलेटिंग टू ट्रेडिंग एक्टिविटीज. तो अगर एक पार्ट ऑफ द बिजनेस प्रेमिसेस को किराए पर दे देंगे, किराया आएगा तो वो किराया अदर इनकम में आता और ट्रेडिंग इनकम में नहीं आता. तो दिस इज नॉन ट्रेड इनकम. तो दिस 10,000 रुपीज विल बी डिडक्टेड फ्रॉम 45,000 टू गेट FMP. As an alternative to his engagement in his business, he could have invested the money in long-term deposit the bank, earning a normal rate of return of 10%. अगर ये पैसा उन्हें बिजनेस में नहीं लगाता, ये 2 लाख रुपीस अगर बिजनेस में नहीं लगाता, तो ये 2 लाख रुपीस बैंक में इन्वेस्ट करता और बैंक में उसको रिस्क फ्री रेट 10% मिलता था. एंड ऑल्सो कुड एंगेज हिमसेल्फ इन एम्प्लॉयमेंट देयर बाय गेटिंग एन एनुअल सैलरी इनकम ऑफ 7,200. और अगर ये पैसा बैंक में लगा देता तो उन्हें फ्री हो जाता था. He could have earned some 7,200 rupees as annual salary income. Considering 2% are fair compensation for the risk involved in the business. ये business का risk 2% है, तो normal rate of return, risk free rate 10% है. बैंक में अगर रखाएंगे तो risk free rate 10%, और ये कंपनी में अगर लगाएंगे तो 2% रिस्क है. तो normal rate of return is 10% plus 2%, 12%. तो ये बिजनेस में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR 12%, 10% plus 2%. Calculate the value of goodwill of his business on capitalization of super profit at the normal rate. Ignore taxation. So exactly same problem. Goodwill का formula, super profit divided by NRR into 100. Now see carefully. Normal rate of return 10% plus 2%. तो बैंक रेट जो रहेगा वो रिस्क फ्री रेट 12% है, 10% है, और कंपनी में जो रिस्क है वो 2% है, तो NRR विल बी 12%. तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 लाख रुपीस. तो नॉर्मल प्रॉफिट 2 लाख इंटू 12%, 24,000 रुपीस इज द नॉर्मल प्रॉफिट. नाउ FMP मालूम करना, एवरेज एनुअल प्रॉफिट 45,000 लेस नॉन ट्रेड इनकम. नॉन ट्रेड इनकम ये 45,000 रुपीस में से 10,000 रुपए वो इनकम है जो कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन पार्ट ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस, विच इज नॉन ट्रेडिंग इनकम. निकाल देंगे इसको. 10,000 निकाल दिया, 35,000. एनुअल सैलरी फोरगॉन. अगर ये वाइजमैन जो पर्सन है, अगर वो बिजनेस में पैसा नहीं लगाता
तो he would have earned some 3,600 7,200 rupees as salary. लेकिन business चलाने से he has to forego the salary which he could have earned. अगर वाइज मैन बिजनेस चलाएगा तो उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता है, दो में से कोई एक काम करना उन्हें, या बिजनेस चलाना या एम्प्लॉयमेंट करना. अगर बिजनेस चलाएगा तो एम्प्लॉयमेंट को छोड़ देना, अगर एम्प्लॉयमेंट कर रहा है तो बिजनेस को छोड़ देना. तो अगर वो बिजनेस चलाएगा तो ही इज फोरगोइंग हिज इनकम. व्हाट इनकम? सैलरी इनकम इज फोरगोइंग. तो माइनस कर देंगे 7,200. तो एफएमपी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ऑफ दिस बिजनेस इज 27,800. FMP we got 27,800 and normal profit 24,000. So super profit FMP minus MP 27,800 minus 24,000 3,800. Super profit. Now goodwill according to capitalization method, super profit by NRR into 100. Super profit 3,800, NRR is 12%. Normal rate of return is 12% into 100. 31,667 is the value of goodwill. That's all. See here. This topic, valuation of goodwill, we have discussed the meaning of the term goodwill, features of goodwill, need for calculation of goodwill, factors to be considered for calculating goodwill, and what are the different methods of calculating goodwill. Average profit method, super profit method, capitalization method. अब ये theory, one video I have complete made on explaining the theory. Before starting the problem, my suggestion is have a good command on the concept. Then easily you can enjoy, you can understand the problems on valuation of goodwill. So directly goodwill के problems पर मत जाइए, पहले theory को पहले coolly listen करिए, concentration के साथ सुनिए goodwill क्या है, कैसा calculate करते हैं, method क्या है, average profit कैसा calculate करेंगे, super profit कैसा calculate करेंगे, capital employed कैसा मालूम करेंगे, कौन से assets लेंगे, कौन से assets नहीं लेंगे. ये सारी चीजें अगर carefully सुनेंगे तो आपको problems बहुत ही easy लगेंगे. Or according to my opinion, this valuation of goodwill is the easiest chapter compared to all other partnership, company accounts, सारे chapters को अगर compare करें तो valuation of goodwill is very easy chapter. So जो चीज easy है उसको पहले good command कर लेना, जो difficult है उसको बाद में, right? So this valuation of goodwill I have explained according to my best of my ability. जितनी मेरे पास ability थी मैं पूरा explain कर दिया. Now it's your job to take the advantage from this lecture. So I wish you all my, the persons, the students who are watching my videos, all the best for your knowledge, for your increment in your knowledge. Okay, inshallah in the next video we'll start the new topic called valuation of shares.